गाइस वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्च अ फ्लो फ्रॉम योर कस्टम ऐप। हम लोग अपने ऐप पर या स्टैंडर्ड ऐप पर कैसे हम इस रिकॉर्ड पेज पे अपना फ्लो को लॉन्च करेंगे। लाइक सपोज कर लो मेरे पास मैं अपॉर्चुनिटी के ऑब्जेक्ट पर हूँ एंड मैं किसी एक रिकॉर्ड को खोलता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना अपॉर्चुनिटी को कैसे लॉन्च करूँ, फ्लो अपने फ्लो को कैसे लॉन्च करूँ इस बटन पे। ओके, जैसे कि ये पिछले सेशन में देखा था कि क्लोज योर अपॉर्चुनिटी को लॉन्च किया था हमने लास्ट सेशन में। सपोज करो मेरे पास एक फीडबैक फॉर्म है। जस्ट क्रिएट अ फीडबैक फॉर्म थ्रू स्क्रीन फ्लो एंड मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूँ अपने हर रिकॉर्ड पर। ओके, गो टू फ्लो, न्यू फ्लो, start from scratch, next screen flow create, plus on this icon click on screen and firstly एक फीडबैक फॉर्म ले। तो फीडबैक फॉर्म में एक नॉर्मल फॉर्म होती है जो मैं एक नॉर्मल जैसे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर एंड दैट्स इट, नेम या फ़ोन नंबर। ओके, सो फर्स्टली टेक फुल नेम, ओके, फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, देन आपका आता है फ़ोन नंबर, पिकअप दिस ट्रैक ऑन। ओके, it is required, yes it is required. Name also required, so select the disabled no, select filter display, first name, last name, read only no, yes, middle name, okay, suffix disabled. Label is equal to full name. Okay, full name में first name and last name हो गया, ऐसा लोकेशन, ठीक है, उस टाइम से जो भी होगा फोन नंबर मैंडेटरी फिल है। ओके, and is the text, non-text area, comments, EMTs, comments, it is required, and email also, email, email, email. Required, true. So just label it name, simple form. Okay, just create the simple form, that is full name, first name, last name, phone number, email and comment. That is, this is all done. Click on save, simple form. Okay, name it, create a simple form, save it and activate this. And this is how you can basically हम लोग हर रिकॉर्ड पर इसको लॉन्च करना चाहते हैं। एक्टिवेट करने के बाद गो टू योर अकाउंट,
किसी भी टाइप पर अकाउंट, अपॉर्चुनिटी, लीड्स, लेट्स सपोज लीड, मैं इस लीड को लॉन्च करना चाहता हूँ लीड के ऑब्जेक्ट पर। क्लिक ऑन दिस एनी ऑब्जेक्ट, ओके, जस्ट एडिट ऑब्जेक्ट, go to separate edit object, and in the page layout, click on button links and action, click on new action, click on flow, action type will be flow, and create a simple form. This one, okay, form, okay, click save, okay, go to page layout, in the lead form, click on lead layout, and you will see mobile lightning action form, search form. Yeah, click on this, just drag this on the Salesforce mobile and lightning experience action form, click save and save. Okay, just refresh this lead. Here a button will be shown for the form. Click on this form. Yeah, first name, last name, phone, email, and comment are to be. Okay, Mr. Vida, click on next, click on another record, that is Violet ब्रिंडा मैकलर, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया था, सेम थिंग यहाँ पर बटन के फॉर्म में मुझे क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन launch a flow from to screen, launch a flow to a screen flow and in the an action button form. Okay, I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel. So thank you guys.